तो जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, आपका वीडियो आप ऑफ कर सकते हैं, और आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज हो तो प्लीज म्यूट करना, आपके फोन म्यूट करना, और हम लाइव पे जा रहे हैं अभी. Okay, so Professor West, it means we're live. Oh, yeah. Professor West, you don't understand Hindi? No, I wish I did. I've got to catch up. All right, Professor West, we're having enough of a hard time catching up with you in English, so it's all right. All right then, guys. So should we give it a couple minutes? Are people logging on, or is this our start time? Ready whenever you are. Let's give it like 1 minute so people could join. Okay. All right, guys. Well, we're about to begin, and you know, our ancestors are here with us. So thank you so much for being here. We're going to do this together. So Jai Savitri, and we are here. Debbie, Jai Savitri. Yes, absolutely. Is this our start time? Okay, guys, should we begin? Yes. All right. All right. Jai Beam, everybody, and Jai Savitri, welcome everyone to this Equality Lab session that we have here today with Professor Cornel West, Chandrasekhar Azadji, and parliamentarian Tanzila Kambrani. It is an honor for us to be able to host this conversation, and it is a first for us to have a conversation across 5 to 6 time zones. But what's most important for us, we are very honored to hold this urgent conversation because of this unprecedented historical moment that we're in. And for those of us that are in South Asia, we basically went from the process of genocide into pogrom, into pandemic, into now witnessing and being in allyship with the powerful process of Black liberation that is happening now in the United States and around the world. So as we look at these urgent moments, what was very clear for us is that so many of us are looking at the uprising of Black people, and it reminds us of the crucial and important politics of Black internationalism. And it is that politics that's actually going to drive the through line of our conversation, because we want to know, what is this internationalism that animates not just Black and Dalit and Shidi international solidarities, but also redefines how South Asians confront their own anti-Blackness and anti-Dalitness. So before we get into the conversation with our wonderful panelists, I really want to bring in for our audience who may not be as familiar with the terms of Black internationalism, but I want to really bring in the definition of Professor Keisha Blaine and summarize a little bit about how she talks about Black internationalism, where she refers to it as the insurgent political urgent culture that responds that is a response to slavery, colonialism, and imperialism, so that the visions and the freedoms of Black freedom really animates the international solidarities that come out of that. And that Black efforts for freedom had to use transnational collaborations and solidarities in order to overcome the dehumanizing system of white supremacy. And, you know, I think that, you know, for many Dalits and caste oppressed people, as well as for people who are of African descent within South Asia, this Black internationalism is so crucial because it sets a foundation for oppressed people to see each other. And I know that for many Dalit Americans, we were mentored by professors like Professor Cornel West, but so many other Black scholars and Black feminists, really because of that spirit that in order for one of us to be free,
all of us needed to be free. And so I think that, you know, as we begin this conversation, I really want to remind people that we have a whole tradition of Black internationalism that has informed so many of our movements against for racial justice, and also for to defeat Brahmanism. And some of those figures, I just want to bring their names in because they're really are what grounding us right now. So this includes Angela Davis, Malcolm X, Kwame Nkrumah, Marcus Garvey, Paul and Islanda Robeson, Aimé Césaire, Gwen Patton, Patrice Lumumba, Elaine Brown, Kathleen Cleaver, Asada Shakur, Bell Hooks, Linda Burnham, Margo Okazawa Ray. There are so many names and so much history there to draw upon. And for those of us that are just learning about Black internationalism, we'll be adding a series of links so that you can learn and really come into this moment. But I also want to flag, particularly for South Asians who aren't used to thinking about an anti-caste mindset, that there are many Dalit internationalist collaborations that have met and built solidarities with Black movements. And this includes and was foreshadowed by the relationship and the correspondence between Dr. Ambedkar and W.E.B. Du Bois, but also the synergy between the Black and Dalit Panthers, as well as the many, many agitations and policy collaborations at both the UN Conference Against World Racism, as well as the World Social Forum in Mumbai. And the thing is, someone who had participated in some of these events, it was such a powerful thing to be a Dalit and a daughter of Ambedkar, and to hear the sound of the Dalit drum of the Parai amongst the many languages of freedom as people were fighting for their rights. And I think this is really the potential that we want to animate in our conversations around South Asian solidarity in this moment towards Black struggle, because again, this is really about oppressed people seeing each other. And, you know, we have seen like powerful outcomes from journalists like Kenneth Cooper and Sudipto Mandal sharing and looking at across caste and race divides, as well as Dalit and Black feminists who have seen each other and worked with each other and think about intersectionality. So Kimberly Crenshaw and Loretta Ross and Manjula Pradeep and Ruth Manarama, these are all women who have kind of paved the way in this powerful tradition of Black internationalism. And I think we see each other because of the pain of impunity, and that's why we conspire for freedom together. So I think that, you know, what I really encourage people who are in our audience listening is to hear our speakers from the presentations of their movements and also from their political vision of the possibility of today. Because too often we've seen both white and upper caste reformist visions stop the road to abolition and be the roadblocks in order for us to be able to be free. So I think we're really here to invoke that liberatory vision to really begin our conversation today. And I think that with that notion, I really want to bring in Dr. Cornel West. And Professor West doesn't really need an introduction, but I really want to think about your role as a Black revolutionary thinker right now, and that really a big part of your revolutionary politic has been the internationalism you've extended to many movements, whether it's the Dalit movement in South Asia or Palestinians in their fight for their homeland. You have really seen your freedom linked to the freedom of other peoples. And so many in our audience right now really want to hear from you, Professor West. How do you look at this particular moment of history in terms of Black freedom? Well, I'd first like to say I am blessed to be here. And I salute each and every one of my brothers and sisters and comrades, and just be able to work with you, Sister Tina. We go back now many years marching in Washington, D.C. and singing Fannie Lou Hamer songs and Bernice Reagan songs on the street in front of the White House. It's always a blessing to be in conversation with you. I come with a deep spirit of humility that I'm here to learn. I'm here to listen. But I will say that I've always had great joy in being a part
of a Black freedom struggle that is rooted in the belly of the beast. It's rooted in the American empire. And at the same time, it is connected to struggles all around the world. It could be Colombia, it could be Haiti, it could be West Bank, it could be Roma brothers and sisters in Europe. It could be Jewish brothers and sisters in France being attacked and so forth. There's an internationalism that's crucial. But when it comes to my precious Dalit brothers and sisters, the rich legacy of Ambedkar, and when it comes, I'm learning more about the Shidi brothers and sisters in Pakistan. We must have an international solidarity that has a vision of where we want to go, that has a moral and spiritual and artistic dimension, which is very important. We must have an analysis of power that begins with empire, with imperialism, always rooted in predatory capitalist expansion, in which white supremacy, Brahmin supremacy, patriarchy, homophobia are elements within that attempt to subordinate peoples in order to gain access to their lands, to dominate them, to exploit them. At the same time, we must have a praxis. And this takes us back to the issue of spirituality. You see that what we're talking about here tonight is revolutionary love in Pakistan, India, in the American empire, and it relates to every corner of the globe. And revolutionary love simply says that we believe that oppressed peoples ought to be the lens through which we look at the world, their suffering, their doings, their joys, their sorrows, centrality of the drum that comes out of the first peoples of the species, Africans, and the expansion of those Africans around the world, and the ways in which white supremacy and Brahmin supremacy, always rooted in predatory forms of economic production in the modern world, especially capitalism, tend to want to degrade and dishonor, and most importantly, divide us so that we do not come together and see what we have in common, so that our solidarity is not given a priority. And so I think the tradition that you invoked in terms of some of the figures become very important. We're at a moment now where the U.S. empire is undergoing deep decay, deterioration, and decline. There's a neo-fascist gangster in the White House, very much like the neo-fascist gangster ruling India right now. There are people who are coming awake owing to vicious forms of police murder, vicious forms of police brutality, but it's also tied to poverty, decrepit schools, not enough jobs with a living wage, no access to health care. All of these conspiring in the context of the pandemic too, and 400 years of white supremacist slavery and white supremacist neo-slavery in the US empire. So this is a very unprecedented moment because it's so broad, 2,000 cities now. When Martin Luther King Jr. was shot on April 4th, 1968, we had 175 cities in rebellion. Now we've got 2,000. This is unprecedented. And it's also now international. It's global. And we have to take advantage of this movement, seize the ways in which the best of our history, the revolutionary love tied to serious talk about justice and freedom, acknowledging the central role of the arts. And I want to end on this, the central role of the arts, because for oppressed peoples, and especially African peoples, there has to be quality forms of spirituality, culture, arts, and music that can sustain us in the face of white supremacist, predatory capitalist backlash and clampdown, vicious forms of repression, so that we know that there's a joy inside of us, a love we have for mom and dad and grandparents and ancestors that can never be taken away. I don't
no matter how powerful those who rule at the moment are. They want to break our spirits. Our spirits must be fortified before we're then able to have the larger vision, the subtle analysis of empire, capitalism, imperialism, patriarchy, homophobia, and so forth. And then the practice, breaking the back of fear. Breaking the back of fear. Martin Luther King Jr. used to say, I'd rather be dead than afraid. Ellen Pleasant, who was a black woman who gave nearly $1 million to John Brown. John Brown was a white brother who died for black people, fighting against slavery. She used to say, I'd rather be a corpse than a coward. Courage, the centrality of fortitude and courage at the level of our spiritual selves, our soulful selves, connected to the revolutionary love, always with a smile and always with style. Well, Professor West, definitely always with style and always with the heart. But I really also want to just keep digging into what you're talking about, because again, this revolutionary love is the spirit that will not be tamed and will also not be extinguished by this predatory economic system. And I think that, you know, in your most recent interview with Democracy Now!, you talked about how, you know, this movement of Black liberation is really a response to the American empire, to both inequality, both at home, as well as, you know, vicious imperial militaristic relationships abroad. And so too must the resistance also be international. And I think that's really how I looked at the lens of Black internationalism, is that in order to work around the violent predatory systems of white supremacy, Black folks were driving and building agendas for their freedom, you know, as long as slavery existed. And so I'm just wondering, again, if you can speak to this historical moment right now. I know that you've talked about how there's an unprecedented level of protest. You have people that are here calling for abolition. I'm wondering if you can tie this conversation back to this question of abolition and how this can take on a global lens in that way. Well, first, just very briefly, I would want to just note certain Black revolutionary voices and organizations that are wrestling with that question. I think of the Black Agenda Report, Brother Glenn Ford and Margaret Kimberly, Brother Danny, and the others who have been trying to ensure that we always have a link between the local and the global as it relates to the issues of empire and capitalism and so forth. I think of the Black Alliance for Peace, my dear brother Jicho-Kubwa Baraka, who is a very, very important and powerful voice here. I think of Cedric Robinson's book, Black Marxism, which always calls for international solidarity flowing from the best of those voices in the past. They're almost the comrades of Ann Betker within the U.S. empire, looking at the world through the lens of Black people, either on plantations, in ghettos, in hoods, but with a spiritual royalty and a moral nobility. That's who Malcolm X was. He was our royalty. He was our nobility because his revolutionary love cut so deep. So the question becomes then, well, what does it look like today? What is so crucial to understand the present moment is to understand what happened just a few years ago, and that is the Obama presidency, the tremendous level of expectation that so many Black people had for a Black neoliberal head of the U.S. empire who would deliver to Black people, who would be able to come to terms with Wall Street, come to terms with the Pentagon, come to terms with poverty, the things that he did not do. Bailed out Wall Street, continued to drop the drones, killing precious brothers and sisters in Somalia and Libya and Pakistan and Afghanistan, killing innocent people and civilians and so forth. And the wealth inequality went up, Black poverty went up, Black middle class was devastated, and there he was, Black face of the American empire. So Black folk became confused.
what is going on. So there's a Black Lives Matter movement under a Black president, a Black Attorney General, was the Black Secretary of Homeland Security. 2013-14, it emerges right in the context of this Black neoliberal rule. And so what people have not really adequately come to terms with is the Black response to that disappointment and transfiguring that disappointment now into a very powerful response to a neo-fascist in the White House, Donald Trump. So that the juxtaposition of recognizing, of course, the neo-fascist Trump must be resisted at every level. But now more and more people are seeing even the Black neoliberal president with Black neoliberal elected officials could not speak to the deep issues of poverty, of militarism, of war, of economic subordination, or even class subordination. And so I think these are the real challenges at present. If the present moment is a moment in which we only talk about police murder of Black people and don't make the connection of 800 military units of the US government around the world, the expansion of AFRICOM in Africa, the drones still being dropped in Southeast Asia and the Middle East, and then don't come to terms with Wall Street domination of the economy, we miss out. The Black internationalism that we're fighting for misses out. We've got to make these connections so that our solidarity is real and concrete. That's precisely why our conversation today is so very, very, very important, my dear sister. And I think this is really the really crux of it for me, is that we are in an unprecedented moment of authoritarianism, where, you know, when you think about the last time we had fascism ascendant, we had one Hitler, but you know, we had the Axis powers, but there was 3 or 4 of them, right? We now have authoritarian figures and that in charge of almost all of the major democracies of the world. When you think of India and Brazil, and you think of the UK and United States. Right. Hungary, that's right. And Italy and Japan. Yes. And in this moment of rising authoritarianism, I really want to go back to, you know, you're thinking about how is the opposition to global authoritarianism and American empire really Black internationalism? And particularly as Black internationalism forces us to really take apart the global and the local foundations of American empire. So I'm just wondering if you could speak to that last point, and I think that'll open up the way for others. Absolutely. And I'll be brief because I really want to hear from my brothers and sisters here. But no, the raw violence, the raw exploitation, and the raw degradation of the larger white supremacist capitalist nation state, the white supremacist empire of the United States, the Brahmin supremacist project in Asia, especially India, that it is peoples of color, it is Black peoples, it is people of African descent who bear the heaviest burden, who are bombarded most intensely at the psychic and spiritual level, told they're nobody, less than human, at the economic level, unemployed or very little access to wages with the jobs they have, at the political level in terms of being marginalized regarding their role in the nation state, and at the social and educational level, where the curriculums in the schools are still so narrow and so parochial, it does not embrace the creativity, the intelligence, the imagination, and the history of peoples of African descent in any serious way. So all of those elements, those dimensions are tied together. But when it comes to Black internationalism, it means Black people, we Black people, can actually constitute not just catalysts the way Brother George Perry Floyd Jr. was, with his name now known all around the world, but we become
possibly a moral and spiritual vanguard that become canaries inside of the mind. We're telling you all what's coming on your side of town, your side of the country. We have already been dealing with this for a long time. Listen to us or your whole project will go under. And it's a project of radical democracy. Democracy is the sharing of wealth, of power, of resources for those slashed on the great, great freedom fighter and musician called everyday people. So I think in that spirit, I really want to bring in Chandrasekhar Azad into this conversation. And, you know, for folks who are just learning about him, Azadji is really a firebrand for Dalit liberation today, particularly in an India that's facing the crisis of the Citizenship Amendment Act, but really even the larger crisis of caste apartheid. Chandrasekhar Azad and BIM Army and now his political party, the Azad Samaj Party, have been tireless in their fight to uplift Dalit people and fight the rising tide of violence against Dalit Bahujans around India. And I think despite being a political prisoner and facing police brutality, you know, Azad, in his own words, has said that he and BIM Army have never lost our self-respect or bowed before oppression. And so, and I think that's such powerful words, which I think really bring up words that you've also said, Professor West, because, you know, Azadji said, you know, if the oppressed are pushed back to slavery, only peaceful protests will free us. And so I want to really just, you know, bring in Azadji now into this conversation. And Azadji, could you speak? Tell us a little bit about the urgent conditions for you that Dalit people are facing now and what you want the world to know about what we need in terms of solidarity. जय भीम आजाद जी, ये आपके लिए प्रश्न है कि जो अभी दलितों के लिए सिचुएशन बन गई है भारत में, उसका जरा सा आप विवरण करेंगे सब लोगों के लिए और बताएंगे कि उनकी स्थिति क्या है दलित बहुजन समाज की भारत में। जय भीम। पहले तो सभी को जय भीम। डॉक्टर कॉर्नल वेस्ट साहब, आपका बहुत बहुत, आपका पूरा सुना मैंने, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। आई एग्री विद यू। तंजीला बहन का भी बहुत बहुत जो है स्वागत है, शुक्रिया करता हूँ कि ऐसे अच्छे मौके पे मुझे मौका मिला अपनी बात को रखने का, तो मैं इक्वलिटी लैब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, भारत में पहले बहुजन को समझना पड़ेगा कि ये दलित बहुजन वर्ड क्या है। दलित बहुजन मतलब यानी कि दलित, आदिवासी, अदर बैकवर्ड और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, चाहे उसमें मुस्लिम हैं, उसमें क्रिश्चियन है, उसमें बुद्धिस्ट हैं, उसमें जैन है, उसमें पारसी हैं, जो माइनॉरिटी है यहाँ, उन सबका एक ग्रुप जिसको बहुजन कहा जाता है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है जिसपे हम लोग काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिनके अधिकार अभी भी आजाद भारत में छीने हुए हैं, जिनको तरह तरह से अपमानित किया जाता है। मैं ये कंफर्म कर लूं कि विजय जो है कितनी देर बाद में ट्रांसलेट करेंगे या फिर मैं लगातार अपनी बात करता रहूं? मैं बात कर सकता हूं अभी, मैं आपकी बात कर सकता हूं। ठीक है। So thank you. Yeah. Thank you, Dr. West. Thank you, Equality Labs, and thank you, Tanzila ji, for joining. I do agree with you, Dr. West, with whatever you have said about how we need to fight against the oppression. To talk about the Dalit Bahujan society, first we have to understand what the concept of Dalit and Bahujan is. Dalit and Bahujan society is the society of the oppressed. These form the lower castes, the so-called scheduled castes within India, the other backward castes, and other minority religions such as Muslims, Christians, and also the tribal indigenous population within India. And when we organize, this is the society that we organize with. These are the most oppressed sections of Indian society, and we're fighting for their freedom. तो मैं कह रहा था कि
यहाँ इंडिया में अगर मैं स्पेशल दलितों की बात करूं तो 86% दलितों पे 1 गज जमीन नहीं है। वो जी नहीं रहे हैं, वो किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं, बस वो क्योंकि पैदा हो गए हैं दुनिया में, तो वो अपने जीवन को किस तरह से चला रहे हैं। यहाँ हेल्थ के लिए जो है, हेल्थ यहाँ 2 भागों में बांटी गई है, एक अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। तो आर्थिक रूप से कमजोर ये जो वर्ग है बहुजन, इसके लोग जो है, करोड़ों लोग तो बिना अच्छा जो है इलाज न मिलने के कारण मर जाते हैं देश के अंदर। मैं कड़वी बात बता रहा हूँ, हर 6 घंटे में एक दलित महिला का रेप होता है इंडिया में। तो जिस तरह से गुलाम होते हैं, गुलामों जैसा जीवन जो है इंडिया में दलित और बहुजन समाज के लोग जी रहे हैं अभी भी। विजय, यू कंटिन्यू। Yeah, so 86% of the Dalit Bahujan society owns less than 1 acre of land. When we talk about health inequality, there are 2 different systems. One for the forward or upper caste and the rich folks in India, and one for the Dalit Bahujan society who cannot access proper health care and who do not have proper health outcomes. One of the bitter facts that I would like to mention over here is almost every 6 hours, someone, a woman from Dalit Bahujan society is a survivor of rape and is a survivor of sexual assault. And these are some of the things and some of the oppressions that we're fighting against. तो मैं अगर क्राइम रेशियो की बात करूं, यहाँ एनसीआरबी का जो डाटा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ क्राइम ब्यूरो का, वो कहता है कि लाखों अत्याचार की घटनाएं हर साल होती हैं, उनमें से 26% दर्ज होती है। और मैं अगर कन्वेक्शन की बात करूं कि सजा कितने लोगों को मिलती है, तो जब से ये सरकार आई है, डॉक्टर कर्नल वेस्ट आपको स्पेशली बता रहा हूं, जब से सरकार आई है, पहले 2014 से पहले 26% कन्वेक्शन होता था 100% में से, लेकिन अब सिर्फ 16% हो रहा है। तो हालात बद से बदतर हैं। यहाँ मूछे रखने पे दलितों को मारा जाता है, यहाँ शादी के समय प्रथा में घोड़ी पे चढ़ने में दलितों को मारा जाता है, यहाँ मॉब लिंचिंग होती है, यहाँ तरह तरह के और अपमान होते हैं। एक दलित अपने एक बार के जीवन में सैकड़ों बार यहाँ मरता है अपमान से। यहाँ दलित अधिकारी कर्मचारी हो सकता है, लेकिन उसको उसकी जाति की वजह से, जैसा मैंने सबसे पहले कहा था कि जाति एक बड़ा जो है अभिशाप है यहाँ, उसकी जाति की वजह से उसको जिंदगी भर ये अभिशाप, ये सहना पड़ता है अपमान। तो स्वाभिमानी होते हुए भी उसको जो है तरह तरह के अपमान का सामना करना पड़ता है। अगर वो अदर कास्ट में शादी कर लेता है तो ऑनर किलिंग होती है, उसके पूरे परिवार को, उसकी बहनों को, उसकी माताओं को अपमानित किया जाता है, गांव में उनका बहिष्कार होता है। विजय, कंटिन्यू। Yeah. According to the Crime Bureau statistics in India, there are like hundreds of thousands of crimes that are committed against the Dalit Bahujan society almost every single day. Of these, only 26% used to actually be registered. And one thing to note, particularly for you, Dr. West, is that since this government has come on board, just 16% of those cases now are being registered, and this situation is becoming graver, and there's a graver emergency now. The Dalit Bahujan society undergoes so many oppressions. We face discrimination because we wear mustaches. We face discriminations if we have to ride on horseback. We face mob lynchings over here. And caste, as I have described before, is a curse that a Dalit Bahujan person has to undergo every single day. Even if a Dalit Bahujan person gets a government job or a a highly respected job, respected within the context of Indian society, a self-respected Dalit Bahujan person still has to undergo oppressions such as honor killings if they marry outside of their caste. And these are, again, like various things that we face every single day. We die 1,000 deaths every single day. अगर मैं बात भागीदारी की कहूँ, तो यहाँ जुडिशरी है, हाई कोर्ट के जो है 25 हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर, 325 के करीब जज हैं, मात्र 4 दलित कम्युनिटी के जज हैं। आप ये आइडिया लगाए 1% से भी कम है। मीडिया में हमारी कोई भागीदारी नहीं, 125 न्यूज चैनल के लगभग है यहाँ पर मेन स्ट्रीम के, एक भी दलित एंकर नहीं है। हालात ये है कि ना मीडिया में हमारी भागीदारी है, ना हमारी जुडिशरी में भागीदारी है। अगर मैं बात करूं क्लास 1 जॉब की, तो वहां हम लोग नगण्य हैं, प्रमुख सचिव हमारे नहीं है,
और जो अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन यहाँ दो हिस्सों में बांटी गई, गरीबी और अमीरी की। एक तरफ सीबीएसई बोर्ड है, एक तरफ गवर्नमेंट वो है। गवर्नमेंट में बच्चों को तैयार नहीं किया जा रहा है। क्लास 5th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है 5th क्लास का, उसको अपना नाम लिखना नहीं जानता, क्योंकि किसी भी तरह से हमारे रास्ते रोके जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं संवैधानिक अधिकारों की, तो अफर्मेटिव एक्शन के नाम पर यहाँ बाबा साहब ने हमें रिजर्वेशन का पैटर्न दिया। रोज उस रिजर्वेशन पे हमें गालियां दी जाती हैं, हमारे अधिकार से ये किया जाता है। ये जो सरकार है 2014 से जो बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ आई थी, तरह तरह के षड्यंत्र करके कभी प्राइवेटाइजेशन करते हैं रिजर्वेशन खत्म करने के लिए, कभी सुप्रीम कोर्ट से गलत फैसले लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज डॉक्टर कर्नल वेस्ट, यहाँ पर इक्वलिटी लैब के लोगों को बता रहा हूँ कि बाहर सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट में भी भाजपा के लोग जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, सरकार के लोग दबाव बना रहे हैं, या फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बना के कराए जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो है, जो संविधान, जिस संविधान से देश चलता है, आपके यहाँ भी संविधान है, हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन देश चलता है उसको रोज जलाया जाता है यहाँ, और सिर्फ जाति की वजह से, क्योंकि बाबा साहब द्वारा जो है लिखा गया, रोज हमें अपमानित किया जाता है। तो इतने किस्से हैं डॉक्टर कर्नल वेस्ट, और सभी साथियों को मैं बताऊंगा तो ये मेरी आंखें नम हो जाएंगी और रो पड़ूंगा मैं। किस हालात में हमारे लोग यहाँ जी रहे हैं, लेकिन हम उनकी जीवन बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं तरह तरह के, लेकिन हालात अभी नहीं बदले। ये जो तानाशाही गवर्नमेंट अभी है पूरी दुनिया में, ये अभी पनप रही है बहुत मजबूती से। ये इस दुनिया के स्ट्रक्चर को, लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है, मगर ये हम लोग होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। हम लोगों ने अपना जीवन इसलिए समर्पित किया है कि पूरे देश दुनिया में ये जो शोषित वंचित लोग हैं, चाहे वो ब्लैक्स हो या दलित्स हो या मुस्लिम हो या अन्य बैकवर्ड हो या माइनॉरिटी के लोग हो या सिद्धी कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये जो हमारे अपने लोग हैं, हम इनमें एक मजबूत रिश्ता चाहते हैं। इस देश की महिलाओं को भी, यहाँ सबको इजाजत है, लेकिन इस देश की महिला अपनी चॉइस से शादी नहीं कर सकती। इस देश में उसको नहीं पता उसकी जान कब चली जाएगी। विजय, कंटिन्यू। So we have very less representation amongst various higher strata of society. We have almost just 1% of representation within the judiciary. Hardly 4 judges you will find across India who are from the scheduled caste. We do not have representation within the media. We do not have representation within government jobs. If you look at education, again, it's a 2-tier system. There is one curriculum which is for the richer strata of society. There's a government mandated or state curriculum that is for the poorer sections of society. If you look at someone, a student who's in 5th grade, the student would not know how to write their name. That's kind of the condition of education within our society right now. If we talk about constitutional rights, we have constitutional rights thanks to Dr. Babasaheb Ambedkar, who enshrined the constitutional rights of affirmative action called reservation in India. But since there's been always an assault on these kinds of rights, and since 2014, when this government, the BJP government, has come on board, they've conspired to abolish this affirmative action. And they've gone to the extent that they've also started interfering with the Supreme Court and hindering with how democracy functions within our society. They try to influence Supreme Court judges, and they interfere in all sorts of functionings, even within the judiciary. Dr. West, you have a constitution, we also have a constitution, but over here, the constitution is burnt and by the fascist sections of society. They do not believe in our rights. And it makes me cry when I think about this and think about the oppression of all the oppressed folks around the world, with all the fascism that's spreading across the world. But our work is to dedicate our life to liberate all oppressed people. And I think this is a really important point. I think for people who are following at home, is that I think in the United States, our Constitution is actually a document that was created out of white supremacy. So in many ways, people are fighting to actually get rights from a flawed document. But in India, the Indian Constitution was actually the first legal document written by a Dalit Bahujan. And so for those of us that are oppressed, we actually are trying to experience an India that actually has that actually implements the rule of law. But I think that one of the challenges I think that I really want to speak to in terms of
Azad ji and your current work is that really we are seeing a crisis of the worst kind right now with the Citizenship Amendment Act. And for those people that do not know, the Citizenship Amendment Act lays the legal foundation for a genocide in India, and would create the largest statelessness population in the world. And it targets Indian Muslims and creates a religious criteria for citizenship, affects both Indian Muslims and Dalits and the poor. And it happens also in the context of the abrogation of Article 370 as well. So I think what's so powerful, I think, that Azadji, that people need to know is that in terms of your activism for Dalit liberation, you really see it through this lens of defending the Constitution and allowing for those of us who have been caste oppressed to be able to live in an India where our rights are finally implemented. And I'm wondering if you can speak a little bit to some of the ways that you have done that organizing, both in BIM Army and in terms of your political work with the Azad Samaj Party, and share that with the audience, because not everybody may know about that. आजाद जी, आप अभी ये CAA के मामले में जो आप अभी लोगों को संगठित कर रहे हैं राजनीति में अपने भीम आर्मी संगठन के साथ, और जो अभी आपने शुरू किया है आजाद समाज पार्टी, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि किस संदर्भ में आप ये एक संविधान की रक्षा करने के मतलब उद्देश्य से आपने ये काम चलाया है कि हमको हमारी संविधान की रक्षा करनी है, इसीलिए CAA जैसे कानून को अपोज करना है। इसके मामले में आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, बाबा साहब को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। तो आर्टिकल 15 जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो जाति के साथ नस्ल का भी जिक्र उन्होंने किया है, और उन्होंने ये भी कहा है आर्टिकल 14 में कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। विधि के अनुरूप कोई भी जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं इस देश में धर्म के अनुरूप, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, ये सेकुलर कंट्री है, तो यहाँ ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये तानाशाही सरकार जो है, जैसे वहाँ व्हाइट सुप्रीमेसी है तो यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, यहाँ ब्राह्मण सुप्रीमेसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि 80% लोग बेरोजगार हैं, सिस्टम में हमारे लोग नहीं है, तो रोज इस देश में नई से नई नीतियां बनाई जाती, किस तरह से हमें गुलाम बना के रखा जाए। उसकी कड़ी में CAA, NPR, NRC जो है एक बड़ा कदम था, इसका हम लोगों ने विरोध किया क्योंकि ये इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी कानून बनेगा हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें हमारे भाइयों को और हमारे अपने लोगों को जो पहले से शोषित हैं, दलितों के साथ मुसलमानों की स्थिति भी देश में बहुत भयानक है। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट है, दलितों के से बुरी स्थिति जो है मुसलमानों के देश में है। तो यहाँ CAA, NPR, NRC लाके जो है जिस तरह से कानून में तब्दीली की जा रही थी, हमारी नागरिकता लोगों की छीनने का प्रयास किया जा रहा था, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको छीनने का प्रयास किया जाता है, उसके खिलाफ जो है, और जिन पॉलिटिकल पार्टियों को हम लोग सपोर्ट करें, जब उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया तो हमने एक पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा की जिसको आजाद समाज पार्टी का नाम दिया गया, कि जो लोग मानसिक रूप से गुलामी से मुक्त हो चुके हैं और जो इस देश में परिवर्तन चाहते हैं, रेवोल्यूशन चाहते हैं, इस देश को फिर से मजबूत बनाना चाहते हैं, वो मानसिक गुलामी से निकले हुए लोग मिलकर जो है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करें। यहाँ पुलिस का प्रयोग जो है सरकारी गुंडों की तरह करती है सरकारें, जिनकी सरकार होती है वो पुलिस का प्रयोग करती है और आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती है। विजय, कंटिन्यू। So, Dr. Ambedkar is my idol. He enshrined Article 14 for citizenship within India, and Article 15 within the Constitution of India described no discrimination on the basis of religion. And so these are some of the enshrined rights that we are trying to protect. Just like you have white supremacy within the United States, we have Brahmin supremacy within the Indian society. And this Brahmin supremacist society tries new conspiracies every single day to try and enslave us. In the spirit of these conspiracies is what the National Registration of Citizenship and the Citizenship Amendment Act, NRC-CAA Act, were being brought by the present government, which we believe is anti-constitutional. And any rules that are being brought against the Constitution, which attack our rights directly, we are going to oppose them.
Just like how the Dalit community has a difficult situation in India, so does the Muslims of India have a very difficult situation, and their constitutional rights are being attacked. When the present political parties stopped working for our rights, we decided to launch our own political party, which is the Azad Samaj Party, which is meant to fight for revolution within Indian society and is meant to liberate the oppressed people and strengthen our society. So this is the work based on which we started organizing against the CAA and RC rules. And I think what's also very powerful about the work of Bimarmi and Azad Samaj Party is you also see it in terms of the Black Panther Party, where the Black Panther Party, you know, was really known not just for resisting white supremacy, but providing key services, education, breakfast for children, support for sickle cell anemia. And this is all happening because the state has failed, like Professor West spoke to deal with the material conditions of poverty. And so I think this is also what's so critical when we're looking at solidarities across Black, Dalit, and Shibi communities, is that the state is not only failing in its duties to protect all peoples, but it is also a predator when it comes to police violence and police brutality. Because that is also, I think, one thing that is such a profound connection between Black and Dalit peoples, is that whenever we have seen resistance from Black revolutionary movements and Dalit revolutionary movements, we have always seen political prisoners, whether it's Mumia Abul Jamal or, you know, Brother Geronimo Pratt, or indigenous leaders like Leonard Peltier. You know, there is always an act of violence that points to the larger violence of this carceral system. And, you know, Azadji, you have been a political prisoner for the fight for Dalit freedom. And, you know, many Dalit people around the world saw how you were put into jail, and our hearts were with you and your mother and your family as we waited for you to come out. And I'm wondering if you can speak to the conditions of India's prisons, and also how they are used against Dalit and other caste oppressed and religious oppressed peoples. आजाद जी, आप ब्लैक पैंथर जैसे पार्टी से भी प्रेरणा अपनी लेते हैं, जैसे उन्होंने अपने आप को सिर्फ सरकार के खिलाफ संगठन नहीं किया था, उन्होंने ये भी संगठन किया था कि लोगों को कैसे खाना खिलाया जाए, उनके एजुकेशन के बारे में सोचा जाए, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए। आपने भी ऐसे कई काम किए हैं और ऐसे हम भी देखते हैं कि कैसे समाज को संगठित करना है। आप भी एक राजनीतिक बंदी रह चुके हैं, आप जेल जा चुके हैं राजनीतिक मामलों के अंतर्गत, और आपने पुलिस की ज्यादतियों को देखा है बहुत नजदीकी से। क्या आप लोगों की समस्याओं और स्थिति के बारे में लोगों को बता सकते हैं कि जेल में, इंडियन जेल में क्या क्या सिचुएशन है लोगों की? देखिए, ये अच्छी बात आपने मुझे बताई। मैं नेल्सन मंडेला साहब को बहुत पढ़ा है, वो भी मेरे आदर्श हैं, क्योंकि उनके जीवन से भी मैंने बहुत सीख ली है। मैंने ब्लैक पैंथर की मूवमेंट को भी बहुत करीब से सीखा। ऑल पावर टू द पीपल जो है, वो जो नारा था, उसने बहुत जान दी है। उसने बताया कि किस तरह से हम लोग जो है अपने लोगों के लिए अधिकार ले सकते हैं। तो बात अगर मैं पुलिस की बर्बरता करूं तो मैं एक घटना आपको याद दिला देता हूं। यहाँ भारत में एक जगह है, एक प्रदेश है बिहार जिसको कहते हैं। गौर कीजिएगा सब लोग कि वहां पर एक दिन में 50-50 दलितों की हत्या हुई है, सामूहिक नरसंहार जिसको बोलते हैं। लेकिन वो लोअर जुडिशरी से उनको क्या किया गया कि उनको सजा हो गई है आजीवन कारावास, लेकिन हायर जुडिशरी ने उनको 10 साल में रिलीज कर दिया है। आज तक इंडियन पुलिस को, इंडियन जुडिशरी को, इंडियन जो है वो एजेंसियां, हमको ये नहीं पता लगा कि दलितों की 50-50 दलितों की बच्चों की हत्या किसने की। आप समझिए, तलवार की नोक पे जो है नवजात शिशुओं को ऐसे खड़ा करके जो है उनकी हत्या की जाती है। तो यहाँ की जो पुलिस है, मैं अगर पहली बात पुलिस की करूं तो पुलिस यहाँ सरकारी पुलिस है, सरकार के हिसाब से काम करती है। अपराध होगा, उसकी रिपोर्ट करनी है नहीं करनी है, उसकी रिपोर्ट लिखनी है लिखनी है, पुलिस तय करेगी। फिर उसमें अपराधी को जो सरकारी संरक्षण होता है, उसको जो है उसके एवज में लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन पर झूठे मुकदमे किए जाते हैं।
भारतीय जेलों में लाखों लोग जो हैं वो बहुजन समाज के इसलिए डाले गए हैं क्योंकि वो अपनी आवाज उठा रहे थे, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, वो अन्याय के विरुद्ध बोल रहे थे। तो ऐसे लाखों लोग जो हैं अभी जेल में हैं। अभी अंबेडकर नगर की एक घटना मैं आपको जिक्र कर देता हूँ, 2-3 बहुत छोटी छोटी घटना मैं आपको बता देता हूँ। अंबेडकर नगर में 9 जून को अभी इसी मंथ में एक रेप हुआ, ओबीसी बैकवर्ड क्लास की एक जो है बहन का, और 22 जून तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपराधी को बचाने के लिए पुलिस जो है 4 लोगों के नाम निकाल रही थी, वो सामूहिक रेप था, उसको सिंगल रेप में बदल रही थी। तो फिर हमारे लोगों ने जब उस पर आवाज उठाई तो हमारे 30 लोग जो हैं इसी महीने 22 तारीख की रात को जेल भेजे गए। विजय कंटिन्यू। Yeah. So I am a believer in Nelson Mandela. I have read a lot about him. I draw inspiration from the Black Panther Party. I believe in the slogan of all power to all people. So thank you for bringing that up. When I talk about the police excesses, I can talk about a state called Bihar in India where there was a group massacre of people, of around 50 people or so being massacred on the same day. You'll be surprised to know that even though some people were arrested, after some time, all people were released, all the accused were released, and the Indian judiciary, 20 odd years from now, still has not been able to identify who are these people who killed 50 odd people, 50 odd Dalits on the same single day. People from the Dalit Bahujan society are harassed every single day. If you look at the jails, there are hundreds of thousands of Dalit Bahujan people who've been arrested. And our primary crime is that we've been fighting against injustices. If I talk about also a recent incident in Ambedkar Nagar, there was a gang rape of women and almost and people have been set free. There's been some impunity even in this incident. Even when because we've organized against this particular heinous incident, 30 people from our organization have now cases registered against them. Oh, sorry, go ahead, Daji. 2 अप्रैल का एक मामला हुआ था, 14 लोगों से ज्यादा की जान गई थी, हजारों लोगों ने जेल काटी। हमारे जो एक्ट हमें अधिकार मिले हुए हैं, जो हमें कानून मिले हुए हैं, उनके कानून के बदलाव के विरोध में हमारा आंदोलन था। विक्रम संतोष की बिहार में हत्या हो जाती, पुलिस पीट के मार देती, क्योंकि विक्रम जो है एक अदर कम्युनिटी की लड़की से प्यार करता था, प्रकाश की, तो उसको जेल में मारा जाता है। उसके बाद जो उठाता है संतोष, उसको पुलिस द्वारा मारा जाता है। जेल में रमन वाल्मीकि की हत्या कर दी जाती है। तरह तरह के जो है, राजस्थान में 8 पुलिसकर्मी एक महिला का रेप करते हैं। पुलिसकर्मी जो रक्षक हैं वो भक्षक हो जाते हैं। मैं खुद जेल में रहा हूँ। जेल में खाने को लेके प्रॉब्लम है, जेल में सम्मान को लेके प्रॉब्लम है, जेल में दवाई को लेके प्रॉब्लम है। जेल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जेल में मर जाते हैं क्योंकि वहां इलाज की सुविधाएं नहीं है, वहां पर जो है और अन्य सुविधाएं नहीं है, आप अपनी बात नहीं रख सकते, जानवरों जैसा सलूक जेल में किया जाता है। अभी डॉक्टर कफील खान बंद है, एक अच्छे डॉक्टर है इंडिया के जाने माने, लेकिन उनको बंद किया गया है। मैं खुद जब जेल में था, मेरी बेल हो गई थी 4 महीने बाद, फिर सरकार ने अपने कानून का दबाव बनाते नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है, जो इस देश का सबसे बड़ा कानून है, वो मेरे ऊपर लगा दिया। मेरा दोस्त ये था कि मैं अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा था। हमारे 50 से ज्यादा घर जलाए गए थे, हमारे लोगों को तलवारों से काटा गया था, मैं उनके लिए लड़ रहा था, तो मुझे जेल भेज दिया गया। जब मैं CNPR NRC पे जमा मस्जिद पर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा था, तो मुझे जेल भेज दिया गया पुलिस द्वारा, क्योंकि सरकार चाहती थी। तो मैंने पूछा कि मेरा दोष बताइए क्या है, तो उनका कहना यह था, मैंने वहां 2 अपराध ये किया था कि मैं वहां कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिम्बल पढ़ रहा था, और मेरे भाई जॉर्ज फ्लॉयड को मारा गया अमेरिका में। ये पुलिस का जो जुर्म है, ये दुनिया में सब जगह है, सरकारें इसमें इसे अपने तरफ से यूज करती हैं। हम अपने गुरु घर को बचाने के लिए, रविदास गुरु घर जो हमारा था, उसको बचाने के लिए जब हम आंदोलन दिल्ली में करते हैं, तो क्या 92 लोगों को जेल भेजा जाता है और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, अपमानित किया जाता है, हमारे लोगों को जो गालियां दे दे के अपमानित किया जाता है। तो यहाँ मानव जो अधिकार हैं, यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो सब ताक पे रख दिए जाते हैं जो सरकार चाहती है। तो पुलिस गुंडागर्दी करती है सरकार के इशारे पे। यहाँ किसी का जीवन सेफ नहीं है। मैंने बताया जेल में अभी रमन वाल्मीकि की हत्या की गई है हरियाणा प्रदेश में, तो यहाँ जीवन सेफ नहीं है। यहाँ अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपको पुलिस का जो है, पुलिस की बर्बरता झेलनी पड़ेगी।
सरकार का विरोध आप करते हैं तो आपको फिर यहाँ आपकी जान भी जा सकती है। गौरी लंकेश की हत्या यहाँ हुई है। जब आप सरकार खिलाफ लिखते हैं तो यहाँ पे झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, और ये सारा काम जो है पुलिस की, सरकार की देखरेख में पुलिस करती है। तो आपके यहाँ तो अच्छा है, और अगर अन्य जगह पे तो कम से कम मीडिया के लोग आवाज उठाते हैं। हमारे यहाँ तो मीडिया को बाकायदा, इतनी करप्ट मीडिया है इंडिया के अंदर कि उनको हर चीज के लिए जो चीज उनको सरकार कहती है वही दिखाया जाता है। सरकार की खामियों को छिपाया जाता है और सरकार की उपलब्धियों को जो झूठी हैं उनको प्रचारित प्रसारित किया जाता है। तो इंडिया में बुरा हाल है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इस पे कंट्रोल किया जाए, इसलिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए सीए, एनपीआर, एनआरसी को भी नहीं समझ पा रहे। तो हम लोग की जिम्मेदारी बनी कि ग्राउंड लेवल पे लोगों को बताएं कि ये कानून किस लिए बन रहे हैं, ये आपके अधिकार छीनने के लिए बन रहे हैं। अभी इंडिया के अंदर आईएएस का एग्जाम होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो इंडिया का जो सबसे टॉप मोस्ट जो एग्जाम है वो होता है। उसके लिए बहुत मुश्किल से बच्चा तैयार होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन लेटरल एंट्री द्वारा ये अपने लोगों का शासन सत्ता पे कब्जा करवाने के लिए ये लेटरल एंट्री कर रहे हैं पिछले दरवाजे से, और अपने लोगों को एंट्री दे रहे हैं। ये किसी भी तरह से इस देश से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को जो कार्यपालिका है उससे निकाल देना चाहते हैं। जुडिशरी पे इनका कब्जा हो चुका है, मीडिया पे इनका कब्जा हो चुका है, सरकार इनकी है। तो जो प्रशासन में हमारे लोग हैं उनको निकालने के लिए तरह तरह की जो है स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है इंडिया के अंदर। So we've had like numerous atrocities in the recent past. There's a person by the name of Vikram Santosh who married outside of his caste, who got killed. In Rajasthan, 8 police officers raped a woman. People who were meant to protect us, they actually committed this heinous crime. I myself have stayed in jail. The conditions of food are extremely bad. The conditions of medicine is extremely bad. Very poor health conditions. We are treated like animals, and the conditions are extremely poor. There are people in India like Dr. Kafil Khan, who's a very kind and a social justice oriented doctor who has been in jail. I was put in jail under a very draconian act called the National Security Act, and my only crime was because I was fighting and organizing against some of the burnings of our Dalit hutments back home in India. And this is why I'm also organizing people against the Citizenship Amendment Act, which is a violation of our constitution. When the police attacks a brother like George Floyd in the US, we do feel the same way. We feel the same levels of oppression. When we fight against injustice, things like incidents like when we fight in Delhi to save our Ravidas temples, the abuse of human rights within India is extremely unrampant, and our situation is very unsafe. At least in the United States, the media has started talking against some of these injustices. Our media is extremely corrupt. It is in bed with the government. It's pro-government, and it's been talking about non-existent successes of the government, which is why we're trying to organize people. And the government in itself is now under conspiracy to also replace any Dalit Bahujan people who exist as government officers. So they're trying to even reduce our representation within the government ranks. So I think that, there is such a crisis right now in terms of oppressed peoples, whether we are seeing the crisis of police violence and rising white nationalism and white supremacy in the United States, the question of Brahmanism and Hindu nationalism in the context of India. And I also think that in this conversation, part of what we're hoping that we can push our South Asian audiences to do is to not take superficial stands when it comes to Black liberation and to Dalit liberation. Because oftentimes when people take these reformist positions or take the conversation related to standing and flanking Black movements for freedom, they often will stop at this little terrain of colorism or, oh yes, we can reform the police. But in many ways, we are looking at predatory institutions that are there to enforce these violent systems. And particularly with the history of the police, we know through the work of many scholars that really the police had its origins in slave patrols.
themselves. And so I think it's very important that South Asians who want to stand up and be in this moment of justice, they must first confront their own Brahmanism and their anti-Dalitness, and then also confront their anti-Blackness. And this is really where I want to bring in Tanzila Kambrani, because Tanzila is of the Shidi community. And Tanzila, the thing that's so remarkable is, I guarantee you, if you ask 10 South Asians, whether in Pakistan or India or the United States or anywhere in the diaspora, and if you ask them, do we have our own African diaspora? They will say absolutely not. And that really goes to show how deeply anti-Black South Asians can be, that we have erased our own histories of the African diaspora that is there, that is the descendants of slaves and merchants and warriors and Sufi saints, but also that this is such a rich tradition of remarkable people that include, historians and poets, and even Malik Akbar, who went from a slave in East Africa to becoming a ruler in South Asia, and in fact built the city that we now know as Aurangabad. But it was our anti-Blackness that we do not talk about the Shidi people. And so I think many people here, when they found out that you were joining the panel, they were very hungry to hear your voice, Tanzila, to see, what is your experience being from the Shidi community, and what are your daily experiences? तंजीला, आपको सुन के ये हैरत होगी कि यहाँ पे जो लोग एंटी ब्लैक सॉलिडारिटी दिखाते हैं, सियाह फाम हुकूक की बात करते हैं, जो यहाँ पे साउथ एशियंस हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि इंडिया और पाकिस्तान में भी एक अफ्रीकन डायस्पोरा है। तो और ये ऐसा डायस्पोरा है जिसमें स्लेव्स भी थे, लेकिन वॉरियर्स भी थे। स्लेव थे जो बाद में रूलर्स बने, जिन्होंने शहर भी कायम किए, जैसे औरंगाबाद। तो एंटी ब्लैकनेस की इंतहा इसी बात से ज़ाहिर होती है कि शीदी कम्युनिटी के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो लोग बेताब हैं आपसे जानने के लिए, पहचानने के लिए कि शीदी कौन है, और अगर आप खुलासा कर सकें कि पाकिस्तान में जो शीदी कम्युनिटी इस वक्त मौजूद है, उसके क्या मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम, गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगा। शीदी, पहले मैं चाहूँगी कि आपको बताऊं कि शीदी क्या है, शीदी का मतलब क्या है। पाकिस्तान में समझा जाता है कि वो लोग जो गुलाम बनाकर अफ्रीका से लाए गए और फिर उनकी नस्लें गुलामी में गुजर गईं, वो लोग शीदी हैं। उनकी पहचान, उनकी कास्ट शीदी है। इसीलिए नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ कास्ट के लोग रहते हैं, खास के लिए हैं, सैयद हैं, लेकिन शीदी का मतलब है गुलाम, स्लेव, और इसे एक अब्यूज वर्ड की तरह यूज किया जाता है। सबसे पहले thank you everyone, Jai Bhim, I'm delighted to be here. The word Shidi is a reference to slaves, Black slaves who were brought from Africa to settle in South Asia. In Pakistan, there are different castes like Khaskelis and Sayyids, but the word Shidi is almost an outcast. It means slave or gulam, and it's also often used as a word of abuse. इसीलिए जब मैं पार्लियामेंट में आई तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि मैं चाहूँगी कि मुझे शीदी बुलाया जाए, क्योंकि हम अगर अफ्रीका से यहाँ पहुँचे हैं या यहाँ लाए गए हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख है। हम अपनी खुशी से नहीं आए, हम एक दरख्त से टूटे हुए पत्ते हैं, तो अगर वो पत्ता कहीं गुम हो जाता है तो उसमें उसका कसूर नहीं है। तो अगर हम गुलाम रहे या हमारी नस्लें गुलाम रहीं, उसमें हमारा कसूर नहीं था, वो एक सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए। इसलिए मैंने चाहा कि मुझे शीदी कहा जाए। हाँ, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारे शेख की वजह से ये हम अपनी हिस्ट्री से भाग नहीं सकते,
लेकिन हमें ट्रीट किया जाए एज अ पाकिस्तानी। हमें वो सारे कानून जो अप्लाई होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया है, जो बराबरी बताता है, जो इक्वलिटी बताता है, उसमें हमारा वही हक है जो किसी भी पाकिस्तानी का हक है। तो इसलिए हमें वो राइट्स मिलने चाहिए। यही शीदी इन्हीं फीचर्स के साथ, इन्हीं मोटे होंठों के साथ, इसी डार्क कर्ल के साथ, इसी एक्स्ट्रा कर्ल के साथ हमें बराबरी चाहिए, और इसी शीदी कास्ट के साथ। When I joined the Sindh Assembly, I insisted that the word Shidi be attached to my name, even if it's a word of abuse. Because this is our history and we cannot run away from our history. The case of the Shidis is like leaves that are separated from a tree. These leaves are separated from a tree and spread all over. In Pakistan, even though there is discrimination on the basis of color, the constitution that Zulfikar Ali Bhutto, our former prime minister, formulated argues for equality, mandates equality. Hence, we deserve all the rights that are available and guaranteed to any other citizen of Pakistan. And we want these rights with our existing physical appearance and form. We own our thick lips. We own our extra curls. We own our body shape. And we deserve not to be disrespected based on the way we look. मेरी यहाँ पे पाकिस्तान में मैं खुद चौथी नस्ल हूँ। मैंने जब एजुकेशन स्टार्ट की, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि हालात इतने मुश्किल हैं, क्योंकि मेरी मदर प्राइमरी टीचर है और मेरे फादर एडवोकेट रह चुके थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। मुझे घर का माहौल एजुकेटेड मिला, जो सराउंडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, क्योंकि मैं फैमिली का सबसे छोटा बच्चा थी। लेकिन यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स, कॉलेजेस में मेरी रैंकिंग इतनी अच्छी रही थी कि मुझे कभी इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ कि शीदी कम्युनिटी के लिए लाइन एक अलग है। जब मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद मैं एशियन बैंक की कंसल्टेंट बन गई, फाइनेंस कंसल्टेंट हो गई, लेकिन असल सी तब पता चला जब मैं पॉलिटिक्स में आई और एक काउंसलर की सीट पे मुझे नॉमिनेट किया गया। तब मुझे पता चला कि अभी तक हम लोग वहीं पीछे खड़े हैं। I am a fourth generation African South Asian living in Pakistan. When I was doing my schooling in Sindh province, I had no idea the kind of discrimination and stereotypes that still exist against the Shidi community. My parents are primary school teachers and activists. I am the youngest in my family, and within my community, I was treated like a VIP, like a very special person. So I was literally clueless about the fact of anti-Blackness and anti-Shidi attitude in Pakistan. I scored very well in my higher education. Then I joined the Asian Bank as a consultant. It is only when I entered politics as a councillor and won a seat that I realized the form of abuse and the negative attitudes that still exist in society. तब मुझे पता चला कि स्कूल शायद वो छोटी सी दुनिया थी, और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अभी इतना हो चुका है कि सब लोग अपने आप को लिबरल जाहिर करने के लिए हमें बराबर बताते हैं। जब पॉलिटिक्स में मैं आई, तब मुझे पता चला कि ये लोग जब आपस में बैठते हैं तो हम पे अभी तक हंसते हैं, हमारे फीचर्स पे हंसते हैं, और वो इस काबिल नहीं समझते कि हम किसी भी इज्जतदार जगह पे आए। जिसका नतीजा ये निकला कि मुझे एक म्यूनिसिपल कमेटी की चेयरपर्सन के लिए जब नामजद किया गया, तो मेरे 19 मेंबर्स हम लोग थे, उसमें से मेजॉरिटी 11th मेंबर ने कहा कि हम इस औरत को अपना चेयरपर्सन मंजूर नहीं करेंगे, इसलिए कि ये शीदी है, ये सेलेब्रिटी बैकग्राउंड होल्डर है,
और इस तरह की शीदी औरतें हमारे घर में काम करती हैं, हमारे बच्चों के शिट साफ करती हैं। तो अब इन्हीं में से एक औरत उठ के सामने बैठेगी और हमें लीड करेगी, ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इसलिए कि ये शीदी है। You know, when I was in college, people can have a liberal attitude, or they can pretend to treat you as equals. When I joined politics, I realized that actually they still laugh at my features. They don't really want to sit together with you at a higher political platform. When I was nominated for the municipal committee, there were 11 out of 19 members, and I was voted as the chairperson. I was nominated as the chairperson. And 11 people out of the 19 in the committee said, what? She will be the chairperson? She is from a slave background. She is the kind of woman who works in our houses, who cleans the shit of our children. We will not accept a Shidi woman as the chairperson. और इसके लिए इनका पूरा वफ्द जो है पार्टी क़यादत के पास गया और उनको कहा कि अगर आप इस औरत को चेयरपर्सन बनाओगे म्यूनसिपल का, तो सॉरी, हम इस पार्टी के साथ नहीं रह सकते। और जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये मना कर दिया कि सिर्फ इस बिहाफ पे कि एक शीदी और औरत है, उसके लिए उससे चेयरपर्सन का वापस लिया जाए नॉमिनेशन, ये पॉसिबल नहीं, तो आप यकीन करेंगे पाकिस्तान की इतनी बड़ी पार्टी से उन लोगों ने अलग होना बेहतर समझा बजाय एक शीदी औरत को वोटिंग करने के लिए। और 100% 19 मेंबर्स हम सेम पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन उन लोगों ने इतनी रेप्यूटेड पार्टी को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि एक ब्लैक औरत आ गया है। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो मैं समझ रही थी कि मुझे वीआईपी ट्रीट किया जा रहा है और सब कुछ अच्छा है, ये सिर्फ मेरा एक ख्वाब था, ये सिर्फ एक अजम्पशन थी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अभी तक वैसा ही समझा जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ कोई थर्ड क्लास जॉब करेंगे। हालांकि हमारे बहुत से शीदी बहुत अच्छी जगह पे आ चुके हैं। मैं आज़ाद भाई की तरह बताऊंगी कि हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो वकील बन चुके हैं, जज बन चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों की सोच नहीं बदल सके। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन नहीं देता ओपनली इनको इस तरह से डिस्कस करने की, लेकिन अभी तक ये चीजें, ये लोग जब आपस में बैठते हैं तो ये अच्छा ये शीदी है, शीदियानी ये कह के अंदर से बहुत अच्छा फील करते हैं। एक तो अमेरिका या यूरोप के में एशियन ऑलरेडी ब्लैक होते हैं, लेकिन ये सोच के कि यहाँ पे शीदी हैं जिनके सामने हम गोरे हैं, शायद अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो और ज्यादा हमें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। So the nature of resistance that I faced when I joined politics was so excessive that people in the same party as the party I belonged to, they set up a delegation and met the party leader, Bilawal Bhutto Zardari. And they said that we would rather leave the political party than accept the chairpersonship of a woman, and that too a Shidi woman. So I was so shocked that the extent of anti-Blackness in society is such that people in the same political party preferred to leave the political party. They actually left the political party because Bilawal Bhutto Zardari stood by and said, no, just because she's a Shidi, just because she's a woman, that does not mean that she cannot lead. So this just shows to all of you, what does it mean for a person of African descent in contemporary Pakistan to get ahead? My childhood illusions that I'm living in a liberal society were shattered. People expect that we should still have third-class jobs. Even people from my community are in good positions. They have become doctors, they have become engineers, but the mindset remains the same. They say, Shidi, they look down upon us. And I wonder
that because we exist, the descendants of Black folk in Pakistan exist, maybe the brown folk actually feel like the local whites, that, oh, we are better than the Shidis. मुझे हमेशा ये दुख रहेगा कि एक ऐसी सीट म्यूनसिपल कमेटी की जो 100% जिसके मेंबर्स पार्टी से थे, पार्टी के नाम पे वोट लेकर आए थे, वो पार्टी को लॉस करनी पड़ी सिर्फ इसलिए कि पार्टी एक शीदी के साथ, शीदी औरत के साथ खड़ी रही। मैं ये सोच जो है, ये सोच हम इतनी नस्लों तक नहीं बदल सके। अगर अभी भी कहीं कोई झगड़ा हो जाए तो अगर एक वाइट पाकिस्तानी और ब्लैक पाकिस्तानी या शीदी का झगड़ा हो जाए तो 90% ऑलरेडी अज्यूम कर लिया जाता है कि ये क्राइम जो कमिट किया गया होगा वो शीदी की तरफ से किया गया होगा, ये झगड़ा स्टार्ट किया गया होगा तो शीदी की तरफ से किया होगा। लास्ट टाइम एक शीदी की डेथ हो गई लड़के की किसी के घर में फायर के दौरान। फर्स्ट अजम्पशन ये की गई कि ये क्योंकि ये शीदी है, ये चोरी करने आया होगा। हमारे बच्चों को अटैच कर दिया जाता है नेगेटिव एक्टिविटीज के साथ। ये जॉर्ज का वाकया सिर्फ नहीं है, हमारे यहाँ ये एक मिथ कायम की है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है और वहाँ पे 4-5 कास्ट इन्वॉल्व हैं, एक शीदी है, तो 50% तो इसमें शीदी का ही कसूर होगा, क्योंकि इनका तो काम ही नाचना है और झगड़ा करना है, लड़ना है, नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है। बाकी जो 50% है वो बाकी 4-5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरह की ये थिंकिंग चेंज नहीं हो पा रही है। मैं समझती हूँ कहीं थोड़ा बहुत हमारा अपना भी कसूर है कि अगर हमारे लोग थोड़ा कहीं आगे चले जाते हैं, कहीं सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो पीछे वालों को भूल जाते हैं, वो उनके लिए कुछ बेहतर नहीं कर पाए। जब मैं म्यूनसिपल कमेटी की चेयरपर्सन नहीं बन सकी तो मुझे अपनी शीदी कम्युनिटी की औरतों के कमेंट्स का पता चला एंड देन आई वाज शॉक्ड। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि हमारी कम्युनिटी से ये औरत नहीं बनी, अगर ये कल चेयरपर्सन बन जाती तो इसने तो और भी ज्यादा हमारे लिए मुश्किल पैदा करनी थी। इसने खुद को अलग करके और बार बार ये सुपीरियरिटी हमें एहसास दिलाती कि मैं चेयरपर्सन बन गई हूँ और मैं, तुम लोग इतने नीचे गिरे हुए लोग हो और मैं तुम में से बेहतर हूँ, सिर्फ मैं ही बेहतर हूँ, तुम में से कोई भी अच्छा नहीं है। तो ये बात मुझे बहुत बहुत तकलीफ दी थी कि हम में से जो लोग आगे गए हैं वो इस तरह उन्होंने पीछे वालों को छोड़ दिया है कि अब जो पीछे रह गए हैं वो नहीं चाहते कि हम में से कोई आगे निकल जाए। I will always feel sad that there were people who did not accept me as a Shidi woman leader. And that makes me wonder, why is it that the mindset has not changed? Generations have passed, but the mindset of anti-Shidi attitude has not changed. Whenever there's a conflict between what I would call a white Pakistani and a Shidi, 90% of the times, the assumption is that the Shidi person must have started the fight. If there is a robbery, if a Shidi person, if it's an inter-caste conflict, the assumption is that 50% blame must be with the Shidi person. And there are certain myths that have become attached to our kind. They only know how to dance. They only know how to fight. So these negative attitudes have meant that negative activities have also become nurtured and associated with our caste. And no matter what we do, we cannot seem to change the attitudes. In this process, maybe some Shidis themselves are also to blame, because sometimes those Shidi members who have gone ahead, they do not help others who are behind. So when I could not become the chairperson, even women from my own community were almost glad. Either they were jealous or they were grateful that, oh, good, she did not become the chairperson, because she would then dominate us. She would then act superior towards us. So there is a larger battle with society. And then within the Shidi community, there are also hierarchies.
And I think the problem is that the Shidis who get ahead refuse to help those who are still behind. मैंने इस सारे सिनेरियो के बाद ये इन दिनों कोशिश की कि मैं जान सकूं कि हमारे शीदी क्यों ये उन पे ये स्टैम्प है कि हम लोग सिर्फ नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस पे मैंने थोड़ा काम किया। देन स्कूल से लेकर सब चीज़ों पे मुझे रियलाइज हुआ कि जब बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो उनके साथ उनके टीचर्स और बाकी बच्चे उनकी बुली करते हैं। और दूसरा, उनको अगर वो होमवर्क ना करें तो बच्चों को कहा जाएगा, अच्छा तुम तो शीदी हो, तुम्हें काम कर पढ़ना तो है नहीं, तुम्हें तो जाके या तो नशा करना है, चोरी करनी है, या मतलब कोई ऐसा काम करना है जो कि माशरे का कोई इज्जतदार काम नहीं होगा, तुमने पढ़ के क्या करना है। इस तरह बच्चों को इतना इंसल्टिंग एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है, इतना इस तरह से कि वो बच्चा खुद को इस माशरे का एक कंस्ट्रक्टिव पार्ट नहीं समझता। हमारे यहाँ शीदी मोस्टली बच्चे स्कूल जाते तो हैं, लेकिन 90% बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे लड़के होते हैं, क्योंकि लड़कों में बर्दाश्त इतनी ज्यादा नहीं होती। और वो फिर जब स्कूल से वो वापस निकलते हैं, फिर वो किसी अच्छे काम में यकीनन इन्वॉल्व नहीं हो पाते। फिर उन्हें इतना तंग होकर स्कूल छोड़ते हैं कि हम तो कोई इस माहौल का पॉजिटिव एक्ट प्ले कर ही नहीं सकते। देन हमारी लड़कियां कुछ आगे निकल जाती हैं। इसलिए शीदी कम्युनिटी में, पाकिस्तान में जो शीदी कम्युनिटी है उसमें लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। और फिर लड़कियों के साथ एक और इशू है कि उन्हें ये होता है कि अब हमारी शादियां, लड़के हमारे साथ शादियां नहीं करेंगे ब्लैक कम्युनिटी के, क्योंकि लड़के नहीं चाहते कि हम फिर किसी शीदी लड़की से शादी करें, फिर हमारे बच्चे ब्लैक पैदा हों, फिर हमारे बच्चों की वही इंसल्टिंग बिहेवियर उनको देखना पड़े। इसलिए लड़कियां चाहती हैं कि हम थोड़ा सा पढ़ लें, कुछ जॉब कर लें, ताकि अपनी लाइफ कुछ बेहतर तरीके से घसीट सकें। I analyze this scenario, that why is the stamp not going away? Why are racist stereotypes not going away? And when I started researching, I found out that the problem begins in schools. In schools, people of Shidi background are bullied. When they do not do their homework, they are told, oh, doesn't matter, you're going to do drugs or stealing. It's not that you're going to join an honorable profession. So there's an insulting atmosphere in school, and they're already being communicated that you will not be proper members of society, a constructive part of society. Because of the insulting atmosphere, 90% of Shidi men leave the school. So it's a very high rate of leaving school amongst our men. And you know, men cannot tolerate the indignities of everyday schooling. So they leave. Women get ahead despite the negative attitude. They are more educated today in our community than the men. And then what happens is that the men do not want to marry their well-educated Shidi women, because at some level they think they do not want black children. Because if they produce black children, they will be stuck in the same negative cycle. So these are the issues facing our community. And in this context, women still try to do better for themselves, try to get educated and get jobs and some security. Oh, sorry, Tanzila. Go ahead. I'm sorry, didn't mean to interrupt. Go ahead. और एक चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व की कि हम वाहिद ब्लैक कम्युनिटी हैं जिन्हें हर जगह पे अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। मैं चाहे एशियन बैंक में थी या पॉलिटिक्स में आई या आज एमपी होने के बाद, हर स्टेज पे हमें अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है कि हम शीदी भी होके भी पढ़ भी सकते हैं, सर्व भी कर सकते हैं, और उनका पाकिस्तानी हम एक अच्छे पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में हेल्प भी कर सकते हैं। ये हमें प्रूव करना पड़ता है। अदरवाइज फर्स्ट लुक हमारे लिए जो भी देखता है उसका फर्स्ट इंप्रेशन, ओके पार्लियामेंट में शीदी औरत आ गई है, ओके बस फिनिश। लेकिन अपने एटीट्यूड से, अपने काम से
मुझे साबित करना पड़ा। मेरे लिए लकी रहा, बहुत अच्छा कि मैं एक ऐसी पार्टी से अटैच हूँ जो वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती है। अभी भी हमारी असेंबली में अगर स्टेयरिंग कमेटी की चेयरपर्सन है, 2 औरतें हैं, तो उनमें से एक मैं हूँ। पार्टी ने मुझे सपोर्ट की, और आज़ाद भाई, इस तरह से मैं एक जगह पे बहुत हम लकी हैं कि यहाँ मीडिया को बहुत ज़्यादा आज़ादी है, और मीडिया ने इस पूरी मेरी जर्नी में मेरी बहुत हेल्प की है, और इस पॉजिटिव वे में लेकर गए हैं कि वो लोग जो कि चेयरपर्सन तो बंदा बन गया था मुझे हरा के या मुझे निकाल के, लेकिन वो कहीं बाहर जाके इज्जत से ये बता भी नहीं पाता था कि मैं चेयरपर्सन हूँ उस म्युनिसिपल कमेटी का। अगर कोई किसी को पता चल जाता, अच्छा तुम वही हो जिसने शीदी औरत को टारगेट किया था, तुम वही हो जिसने तंजीला के साथ गलत किया था, यार तुमने बहुत गलत किया। ये मीडिया ने इतनी हाइप पे ये चीज लेके चला गया था कि हर कोई खुद को लिबरल और पॉजिटिव जाहिर करने के लिए उसे शर्मिंदा करता था। तो ये मुझे मेरी पार्टी और मीडिया की तरफ से ये बहुत बड़ी सपोर्ट रही थी, और यही एक वाहिद पॉइंट है जिसे मुझे लगता है कि शायद कल शीदियों के लिए बेहतर होगा पाकिस्तान में। One of the biggest problems facing us is that we have to constantly prove ourselves, that we can study, that we can serve, that we can be good Pakistanis. I am very lucky that I belong to a party which supports women empowerment. And even in the assembly today, there's a standing committee, and there are 2 women who are leading that standing committee, and I am one of them. The other positive strength that we have, Azad ji, is that there is still freedom of the media. So when a chairperson tried to unseat me in the municipal committee, he is actually shamed by the media. People would harass him and say, you are the man who tried to challenge the Shidi woman and you targeted her. So he, with pride, could not even tell anybody that he's the chairperson. So there is still hope for a positive future because of the political party's support, and as long as we have free media, that even if it wants to pretend to be liberal and positive, will show support to Shidi women getting ahead. I wanted to just ask one quick question before we go to closing remarks for everybody, because we are getting in time. But Tanzila, the thing I think the way that I really learned about you was because I saw an article about how impacted you were by George Floyd's murder and public lynching, and also that you were moving a resolution in Sindh Parliament on his behalf. So I was wondering if you could talk about that policy that you want to push, and also how George Floyd and what he went through was experienced by the Shidi community as well. तंजीला, मुझे आपके बारे में इस तरह पता चला जब जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के ऊपर आपने सिंध असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करने की फरमाइश की। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जॉर्ज फ्लॉयड का जो मर्डर अमेरिका में हुआ, उसको आपने किस तरीके से महसूस किया, और शीदी कम्युनिटी के साथ जो तशद्दुद होता है, जो उनकी जिद्दोजहद है, उसको आप जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर से किस तरीके से जोड़ती हैं? जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये मेरे लिए नया नहीं है कि कोई भी अगर क्राइम हो या सपोज कर लिया जाए उसमें शीदी 50% तो उसमें पार्टिसिपेट शीदी का ही होगा, ये मेरे लिए नया नहीं है। तो जॉर्ज का कत्ल को मैं उसी तरह से देखती हूँ कि उसमें भी उस पुलिस ऑफिसर वहीं पे उसने खुद को जज समझ लिया, वहीं कोर्ट लगा ली, और वहीं उसने डिसीजन कर लिया कि ये क्रिमिनल है और यहाँ क्राइम हुआ है और इसको फौरी तौर पे सजा देनी है क्योंकि ये ब्लैक है। ये यहाँ पे भी इस सोच को मैं देखती रही हूँ, तो ये सोच मैं चाहूंगी कि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से खत्म हो। इसीलिए मैं रेजोल्यूशन लेकर आई हूँ, अपनी असेंबली में जमा करवाया है, और बहुत अच्छी बात यह है कि मेरी पार्टी से बहुत ज्यादा कलीग्स वहाँ पे सिग्नेटरी हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब लोग शामिल हैं। मेरे उस रेजोल्यूशन को उन्होंने सपोर्ट किया है।
अभी हम क्योंकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है, बजट सेशन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हमारे ये पूरा हाउस उस पर डिस्कशन करेगा। अभी तक जो भी ब्लैक रिलेटेड मैं रेजोल्यूशन लेकर आई हूँ उनको उन्होंने यूनानिमसली जिस तरह से पास किया है और अप्रिशिएट किया है, मुझे यकीन है कि इस रेजोल्यूशन को भी हम यूनानिमसली अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस मिलके अप्रूव करेंगे। क्योंकि लास्ट स्पीच में हमारी एक मेंबर ऑलरेडी जॉर्ज की तस्वीर असेंबली सेक्शन में दिखा चुकी हैं और वो बता चुकी हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कत्ल है। So I could see when George Floyd was murdered that the police officer acted as judge, court, and executioner. This is familiar to me because, as I just told you, when a crime is committed in Sindh, Pakistan, 50% it is already assumed that the Shidi person is at fault. So it is the same mentality that oppresses us everywhere. There is a resolution that I have introduced. We have collected signatures from the Hindu community, from the Muslim community, from the Christian community of Pakistan. I have tremendous support for this resolution, and I'm confident that it will be unanimously passed as soon as the budget session is over. Already, I wish to mention that a woman parliamentarian in the Sindh Assembly of Pakistan has brought George's photo to the assembly during a discussion, and it was recognized as the world's biggest murder. Thank you for that, Tanzila, and your powerful words, and also which also are a deep call to action to anyone who is listening. You know, the time to to really stop the denial of South Asian anti-Blackness is today. And it really is your stories and also your firm commitment to Shidi leadership and being the first. This is the first time in the United States that we've heard from a Shidi parliamentarian and a Shidi feminist like yourself. So we really want to thank you for sharing your time and space with us. So I will come back to you. You'll have the last word. Don't worry, Tanzila. But I want to go to the closing remarks of our other speakers because, you know, Professor West, I know this is some of the first times you have ever heard from someone from the Shidi community, as well as from Chandrasekhar Azad. And, you know, you are truly in a company of amazing freedom fighters. And really, again, this is a conversation that was only possible through Black radical internationalism. And so I'm wondering if you could give us some closing thoughts about tying in these ideas of how we are fighting against these systems of white supremacy and Brahminical supremacy, but also the challenges we have to really make these struggles local and global as our liberatory traditions transform these predatory systems. Well, I want to say I'm profoundly inspired and empowered by my Shidi sister, my Dalit brother, and always, Sister Tina. I mean, your brilliance and your eloquence in conducting and negotiating how our voices are intertwined with your questions makes such a very, very important difference. Equality Labs has so much to must take great credit. What a force for good you all are. I'll say this in closing, that as we enable and ennoble each other, that our traditions, specific and local, connect us, international and global, against evil forces that lose sight of the humanity of any body. And they are structures and institutions as well as attitudes and dispositions. That in the end, we're going to have international solidarity, a Black internationalism tied to a brown,
tied to indigenous peoples, tied to it across the board. But the Black International is going to be very important leaven in the loaf. Very important leaven in the loaf. And the loaf cannot expand without the leaven itself being strong. And so I'm just so very, very blessed to be here tonight. I know it's in the morning for our brothers and sisters in Asia, but I've learned so much, and I've been deeply fanned and fueled of fire, so that I'm more fortified. I wish I could be in India right there on the ground fighting with my precious Dalit brothers and sisters. I wish I could be in Pakistan on the ground fighting with my Shidi brothers and sisters. And of course, I say exactly the same thing when it comes to Palestinian brothers and sisters fighting against vicious Israeli occupation. I say exactly the same thing when I think of struggling against dictatorial figures, be it in Africa or be it in Asia. To be in solidarity, to care and concern, to have a care and a concern that takes the form of being willing to empty oneself, being willing to serve others by giving of oneself, one's mind, one's heart, one's soul, one's body, and one's great tradition that filters through each and every one of us. So thank you so very much, Equality Labs. Thank you, my dear sister Tina, for allowing me to be here. Well, in that spirit, I also want to bring in Azadji. We would love to hear your last remarks, because again, so much of what you spoke to is about a democracy in crisis. And India is on the precipice of genocide, and only movements can stop the tyrannical, Brahminical government that we're seeing in play right now. And I'm wondering, because you also brought so many powerful threads of solidarity, both in terms of the response of police brutality, in terms of how oppressed people see each other, and the inspiration that Black and Dalit liberatory movements have within each other. We would like to hear your last closing thoughts to kind of bring in your vital and just so powerfully moving cry for people to stand with Dalit peoples and Muslim peoples and caste oppressed peoples right now. आजाद जी, आप अभी अंतिम समय में हम सबको बताएं, जैसे आपने पहले भी ये दो धाराओं को छेड़ा है कि कैसे ब्लैक समाज की जो संघर्ष है और दलित बहुजन समाज का जो संघर्ष है कैसे एक साथ जुड़ा हुआ है। इसी संघर्ष को एक साथ बढ़ाते हुए आप कैसे इसे आगे लेते हुए देख सकते हैं, और हमें बताइए कि आप अंतिम समय में क्या बोलना चाहेंगे। जरा आप 2-3 लाइनें बोलिए, क्योंकि 2-3 लाइन एक समय में बोलिए, क्योंकि ऑडियंस को थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप उस हिसाब से बोलिए। सबसे पहले तो मैं इक्वलिटी लैब का और यहाँ जो हमारे गेस्ट हैं, हमारी बहन तंजीला उमा हबीबी सिद्दी जो है, और डॉक्टर कॉर्नल वेस्ट, उनका स्वागत करता हूँ। एक लाइन में पहले कह देता हूँ तंजीला बहन को कि आप याद रखिए, आपका एक भाई यहाँ इंडिया में भी रहता है। आज से मैं आपको जो एक्सेप्ट करता हूँ कि आप मेरी बहन है, और जिंदगी भर में इस रिश्ते को निभाऊंगा। मैंने बाबा साहब से महिलाओं का सम्मान करना सीखा है। Okay, so thank you, Dr. West. Thank you, Equality Labs. Thank you, Tanzila ji. Tanzila ji, I want to let you know that you have a brother over here in India, and I will respect this relationship throughout my life. Dr. Baba Saheb has taught me to respect women, and this is one relationship that I will cherish throughout my life. देखिए, बाबा साहब जो है खुद ब्लैक प्रॉब्लम्स के स्टूडेंट रहे हैं। प्रोफेसर ड्यू बोइस के साथ जो है उन्होंने पत्राचार किया 1946 में। उन्होंने वहां की प्रॉब्लम के जो है और जिस तरह से ब्लैक्स ने काम किया उस पे, उसको उन्होंने सराहा। प्रोफेसर ड्यू बॉयस ने उनका जवाब देके भी कहा कि हाँ, अछूतों के साथ भी प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ दलितों के साथ वहाँ दिक्कतें हैं। तो ये रिश्ता बहुत पुराना है, हमें लगता है ये हमारा अपना दर्द। So our relationship between Dalit Bahujan Society and our Black brothers and sisters in the US is very old, as goes to the original correspondence between
Dr. Ambedkar and Dr. W.E.B. Du Bois in 1946, where Dr. Ambedkar described the plight of the untouchables in India and empathized with the condition of the Black community in the US, while Dr. Du Bois also recognized the condition of the untouchables in India and empathized with it. And so this relationship is very old. जब जॉर्ज फ्लॉयड के साथ ये हुआ तो ये लगा कि जैसे अपने भाई के साथ ये हो रहा है, और वो जो यहाँ पे होता है वही वहां पे उस जैसा ही था, लेकिन वहां पर मीडिया है जो दिखाता है, यहाँ पर तो मैं डॉक्टर जैक का जो है, मिस्टर जैक का धन्यवाद करता हूँ, ट्विटर वाले जो मिस्टर जैक हैं, उन्होंने वहां के राष्ट्रपति का ट्वीट डिलीट किया। यहाँ प्राइम मिनिस्टर से सवाल नहीं कर सकते, आप मिनिस्टर से सवाल नहीं कर सकते गवर्नमेंट के। Yeah. So what happened with George Floyd, we felt like we lost a brother. We have similar conditions over here in India, but there is no people who highlight our conditions. I want to thank Jack from Twitter, because he's had kind of the courage to delete some of the tweets that the President of the United States have made, but no one over here can actually question the Prime Minister over here in India and his authoritarianism. जब ब्लैक लिस्ट मैटर का मामला चला, ये पूरा आंदोलन चला ट्विटर से लेके सब जगह, तो पूरे देश में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को समर्थन किया। इंडिया में भी हमने इसको बड़े पैमाने पे चलाया। जो हमारे एनआरआई साथी वहां रहते हैं, हमने उनसे भी अपील की, तो बड़ा समर्थन जो है ब्लैक लिस्ट मैटर को यहाँ मिला। उसके बाद यहाँ दलित लिस्ट मैटर, बहुजन लिस्ट मैटर, ओबीसी लिस्ट मैटर, ये ट्रेंड भी चला है, मुस्लिम लिस्ट मैटर, ये ट्रेंड यहाँ चले हैं, तो एक अच्छा सीखने को मिला। Yeah, when the Black Lives Matter campaign has been carrying on in the US right now, we've been learning so much from them, and we've been trying to campaign on similar lines over here back home in India. We've learned so much. We've started to have movements like Dalit Lives Matter, Bahujan Lives Matter, OBC Lives Matter, Muslim Lives Matter. So we're learning a lot, and we're together in this struggle. सिंधी कम्युनिटी इंडिया में भी है, वो गुजरात में भी रहते हैं, वो हैदराबाद में भी रहते हैं, वो महाराष्ट्र में भी रहते हैं। जो बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो आर्टिकल 15 में जाति धर्म के साथ नस्ल का भी जिक्र किया, क्योंकि वो इस लड़ाई से वो जानते थे, उस लड़ाई को समझते थे, वो इस तकलीफ को समझते थे। हम इंसान हैं, हम इंसानों की तरह चाहते हैं, अपने अधिकार चाहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अधिकार मिला वो हमें मिले, हमारे साथ जो है ये भेदभाव ना किया जाए, ये लड़ाई कॉमन है। So like we also have a Siddhi community in India, like the Shidi community in Pakistan. They live in states like Gujarat, Maharashtra, places like Hyderabad. The Article 15 that is enshrined in our constitution guarantees us equality without discrimination. And so what we want is really human rights and to be treated as human beings. And this is common across the world, and our struggles are actually very, very interconnected. इस तानाशाही के खिलाफ जो तानाशाही पूरी दुनिया में चल रही है, मैं आज एक नारा देता हूं कि दुनिया के तमाम सताए हुए लोग, जाति धर्म नस्ल के आधार पर सताए हुए लोग एकजुट हों और अपनी इस लड़ाई को मजबूती से लड़े। हम अपने मुल्कों में जहां जहां भी रहते हैं, लेकिन हमारे दिल जो एक दूसरे के लिए धड़कते हैं, क्योंकि हमारी समस्या एक जैसी है, तो हम इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। मैं आज वादा करता हूं डॉक्टर कॉर्नल वेस्ट से, अपनी बहन तंजीला से और तमाम देश की दुनिया की उन महिलाओं से, उन भाइयों से जिनको सताया गया, कि हम इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेंगे। और जब तक मेरा जीवन रहेगा, मैं आखिरी सांस तक निस्वार्थ भाव से इस लड़ाई को मजबूती से लड़ता। So against the rising tide of fascism over here, I would like to give a slogan of all the oppressed people of the world, race oppressed, caste oppressed, we unite under one banner, we unite as one, because while we may be fighting in different countries, our hearts beat together as one, and we will continue this fight. And as long as I am alive, I promise to you, Dr. West, I promise to you, Tanzila ji, that my fight is with all of you across the world, across all the oppressed people, oppressed brothers and sisters across the world. We will fight as one. ये जो चल रहा है, एक लास्ट लाइन में कहना चाहता हूँ, ये जो चल रहा है ये इंसानों में नहीं होना चाहिए। जिस तरह का भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन यहाँ है, ये इंसानों में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो किया जा रहा है, क्योंकि ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, ये इनजस्टिस पे जो है डिपेंड करता है।
और हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है, हम अपने अधिकार चाहते हैं। आज भी 10 लाख से ज्यादा मैनुअल स्ट्रेंजर्स जो है सफाई कर्मचारी इंडिया में गटर में उतर के सफाई करते हैं, लेकिन हमें रोज अपमानित किया जाता है जाति की वजह से। ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अब हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन वे में लड़ना चाहते हैं और हम इस देश की तमाम महिलाओं को का सम्मान, उनके अधिकार चाहते हैं, सब शोषित वंचितों के अधिकार चाहते हैं। तो ये लड़ाई अब शुरू हुई है। आज अच्छे सही साथियों से बात हुई है। मैं विश्वास करता हूं, मुझे विश्वास है कि ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी और कभी आप लोग अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिएगा। जब भी वहां से कोई आंदोलन का बिगुल बजेगा, आपको इंडिया में उसका पूरा समर्थन मिलेगा। ये मैं वादा करता हूं अपने सभी साथियों। हम रहे ना रहें, लेकिन ये फांसीवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, नस्लवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, धर्म जाति के आधार पर सताए के लोगों के खिलाफ जो मूवमेंट बनाएगी, उसके खिलाफ जो जंग चल रही है, उनके अधिकारों के लिए जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई कमजोर नहीं पड़ेगी। इतने लोग मैं तैयार करूंगा इंडिया के अंदर आप लोगों के सपोर्ट में और इस चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए, कि इंसानों को इंसान समझा जाए, उनके साथ भेदभाव ना। This is a fight for human rights. This is a fight for humanity. We want to be treated as human beings and not animals. So we will continue this fight. And I want to promise all of you over here that you are not in this alone. As you fight in your respective countries, you will always find supporters over here in India. We are going to prepare and organize thousands of people over here, millions of people over here, who will be organized in this fight across the world, and we will continue fighting for our rights. Thank you. Thank you. So Tanzila, I want to give you the last word and really, bring your voice in, because really your voice was really the inspiration for this panel in so many ways. So Tanzila, what are your last thoughts that you would like to leave our audience with? तंजीला, आपकी आवाज इस अनमोल घड़ी में हमारे लिए बहुत अहम है और मैं उससे बहुत मुतासिर हुई हूँ। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया इक्वलिटी लैब का, डॉक्टर साहब एंड आज़ाद भाई। आज़ाद भाई मेरे वैसे ही एक दलित राखी भाई है और अब मुझे बहुत खुशी है कि मेरा एक और राखी भाई हो गया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमें भी रिश्ते निभाने आते हैं और शीदी आर वेरी मच कमिटेड पर्सन। तो आपको ये साबित करके बताएंगे। Thank you so much, Equality Labs, for bringing us together. Azad Bhai, I have a Dalit brother in Sindh as well, my Rakhi Bhai, and I'm glad to know that I have another brother, and we also know how to maintain relationships. So I'm very happy to develop a new relationship. मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं क्योंकि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अफ्रीकन डिसेंट 2019 की मेंबर भी हूँ और लास्ट ईयर जब न्यूयॉर्क में दुनिया के हम 100 ब्लैक जमा हुए थे, वहाँ एक चीज़ जो हमें बहुत दुखदायक थी हमारे लिए कि हम लोग जिस कंट्री में हैं उसी में रहना चाहते हैं, जो जहाँ है। अब वापस हम अफ्रीका नहीं जाना चाह रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जिस कंट्री में हैं, जिस जगह पे हैं, हमें वहीं वो इज्जत दी जाए, वहाँ वही बराबरी दी जाए, क्योंकि हमारी सारी ईमानदारी अपने मुल्क के साथ है। बीइंग पाकिस्तानी, मैं अफ्रीकन अपने आप को कहलाने से ज़्यादा पाकिस्तानी कहलवाना पसंद करती हूँ। तो मेरे वही इज्जत भी मैं डिजर्व करती हूँ जो पाकिस्तान का कोई भी दूसरा नॉन शीदी डिजर्व करता है। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो मिलेगी, क्योंकि हम सबको इसके लिए कोशिश करनी होगी। इसके लिए बीइंग शीदी हमें कोशिश करनी होगी और जो नॉन शीदी हैं उन्हें ये मानना पड़ेगा। इसके लिए एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो ये कि हम शीदी को एजुकेशन में जाना पड़ेगा। हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमें एजुकेशन के लिए स्पेस चाहिए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें फिश मारने के लिए आप कुंडी दे दें, हम खुद ही मार लेंगे, हमें खाना नहीं दें, हम खुद ही बना देंगे। In 2019, I was part of the most influential people of African descent group. 100 people
from Black communities internationally gathered together in America. And what we came to the conclusion was that we all want to stay where we are. We want the same respect and equality that our current countries, which we call home today, give to their other citizens. We have loyalty and faith in our countries. I sometimes feel that I am more Pakistani than African. And I am hopeful that this moment will arrive. The moment will arrive that Shidis will get equal rights and respect in Pakistan. And non-Shidis will have to accept and offer that solidarity. And for that, two things are necessary. One is education and availability of opportunity that we have been denied. The other is we feel that we want to be taught how to fish. We want to be taught how to get food. The rest we will do together. Thank you. Thank you. And I really want to thank not only all of our speakers, but also all of the people that have tuned in and trusted us with this conversation. This was a big first for our organization, because if you didn't know, we had maybe 4 speakers on the screen here, but we actually had many people working behind the scenes to make sure that this went smoothly and that we had translation that was effective. And so really want to give a shout out to all of those people that that really helped to make this platform happen, because this was history in the making. And I think that the thing that I really want to just emphasize for people is that, you know, in looking at Dr. West's call to really think about how the global is local, and how we need to dismantle American empire with this historical moment of our movements and our protests. The thing that I'm so struck by all 3 of our speakers is that when we fight these fascisms and these incredible predatory systems, we join not out of fear, but we join out of radical love. And we join out of a radical revolutionary possibility that if Black lives are free, all lives can be free. And so I really want the people who are listening to take this deeply to heart. You have heard the voices of 3 powerful leaders and many, 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 many millions of people who they represent. And you cannot leave this, this dialogue and not be moved to act. And so some of the things that we really want, particularly for South Asians that are tuning in, you absolutely must confront your anti-Blackness and your anti-Dalitness. And you cannot be silent, and you cannot be complicit, and you cannot be the reformist roadblock into the powerful moment we have towards freedom. So I would ask you to please make way and clear the path for those that are leading the struggle on the ground, that are risking everything, including the exposure to the virus, to stop genocide and to stop white supremacy, and to stand not just for what we are against, but to stand for what we could be for. And that is really the powerful vision of Black internationalism and Dalit solidarities and Shidi solidarities. And so I want to thank again our speakers, the folks from Equality Labs and the Dalit Feminist Solidarities that allowed this conversation to happen, as well as all of the people who tuned in at home. We will encourage and we will make sure that we have this video available with subtitles, because we hope that this is just the beginning of many powerful Black and Dalit and Shidi conversations. And we also hope that we will be able to have you guys all back again for another round 2, because as you see, we are a talkative group of people and we need more than 2 hours. We need a lifetime. We need a lifetime to understand how we've been separated, correct? Yes, Azaji, yes, please. बहुत शुक्रिया. हम लोग जीना चाहते हैं इसे अपने अपने मुल्क में अपने अधिकारों के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, और हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे. हम इंसानियत का जो धर्म है उसको जिंदा रखें. Thank you, Tanmuri. We want to live in our respective countries and societies with humanity and with self-respect, and we will continue fighting for this self-respect and humanity. Thank you.
Oof. All right then, everybody. Let's go for our folks in South Asia. We hope you have a wonderful day and the thoughts of this wonderful talk go with you. For our folks that are joining us in the United States, we hope this gives you wonderful dreams of the future we're going to build together. So do not despair. We are building a community together of resistance and radical love. And, you know, again, I also want to just thank all of the speakers and everyone again. This was an amazing historical conversation, and it was these solidarities of feminism and Dalit and Black and Shidi movements that really made this happen. And so thank you all. So Jai Bhim and Jai Savitri, bye. Take care, everyone. Jai Bhim, Jai Bhim. Jai Bhim. All power to the people. All power to the people. All power to the people. आवाज दो हम एक हैं